हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 2 लेकर आई हूं जो सिनेरियो बेस्ड होने वाले हैं और एम्स नॉरसेट जो 7 होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। DSSSB और RRB के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Question number 1. A patient was admitted in surgery ward as a case of abdominal COX. After laparotomy surgery, the wound edges are not surgically approximated, so that doctor has applied packing over the wound and left for healing. The integumentary continuity is restored by which type of wound healing method? And the options are primary intentional wound healing, second intentional wound healing, थर्ड इंटेंशनल वुंड हीलिंग या फिर फर्स्ट इंटेंशनल वुंड हीलिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेकेंड इंटेंशनल वुंड हीलिंग। सेकेंड इंटेंशनल वुंड हीलिंग में जो अगर जो वुंड है वो उसका अप्रोक्सीमेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है और वुंड इज नॉट हीलिंग प्रॉपरली, तो उसको ओपन छोड़ दिया जाता है एंड द वुंड इज लेफ्ट ओपन एंड अलाउड टू हील बाय सेकेंडरी हीलिंग, सेकेंडरी वुंड हीलिंग इंटेंशनल। तो इसमें क्या होता है, वुंड का जो बेस है वो डेवलप होता है, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है और हीलिंग प्रोसेस होती है। तो इसको बोलते हैं सेकेंड इंटेंशनल वुंड हीलिंग। Question number 2. Vikas, a 38-year-old, was admitted in the surgical floor with wound over sacral region. The nurse, when doing the dressing of the wound, observed the bloody drainage. While documenting the procedure, the term used by the nurse to denote for blood discharge is first is serous, then sanguineous, then serosanguinous, then purulent। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, सैंग्विनस। सैंग्विनस ड्रेनेज में क्या होता है, इसमें ब्लडी डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है जो कि वुंड से निकलता है और यूजुअली टिपिकल ब्राइट रेड कलर का होता है और इसका मतलब होता है कि कहीं से एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। So this type of drainage is commonly seen in fresh wound or wound with active bleeding. Question number 3. You have received a patient from OT who has had general anesthesia for major surgery, is in the post-operative unit. The patient became conscious and said that he wants to drink some water. Which type, sorry, which is the appropriate nursing action? तो हमारे ऑप्शंस हैं। Option A, check the respiratory rate first. Option B, check the lung sounds. Option C, check the gag reflex. And option D, check the deep tendon reflex. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चेक द गैग रिफ्लेक्स। जब भी कोई सर्जरी होती है तो रिकवरी के बाद पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स प्रॉपरली आएगा तो उसको एस्पिरेशन के चांसेस नहीं होंगे और वाटर जो हम देंगे या कुछ भी पीने के लिए या खाने के लिए देंगे तो वो एक्सीडेंटल जो है एस्पिरेशन के बाद लंग्स में नहीं जाए, इसीलिए हम लोग वेट करते हैं गैग रिफ्लेक्स का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चेक द गैग रिफ्लेक्स। Question number 4. While performing the systemic health assessment, the nurse has to auscultate the heart sound. Identify among the following statement is incorrect related to the auscultation point location. First is apical pulse, fifth intercostal space, mid clavicular line, left side. B is Arab's point, right of sternal border in second ICS. C is aortic, right of the sternal border in the second ICS. And fourth is pulmonic, left side of sternal border in the second ICS. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है Arab's point। जो इन्होंने दिया है वो right of sternal border in second ICS है, बट एक्चुअल में Arab's point is to auscultate for the heart sound, and it is located in the left third intercostal space, and that is close to the sternum. So this is the incorrect statement over here.
Question number 5. A nurse has started the infusion of sodium nitroprusside, which is antihypertensive drug, intravenously to a patient with blood pressure unstable and 160/94 mm of Hg. Before the infusion, the nurse recorded the blood pressure again and found the patient's BP increases to 180/100 mm of mercury. Identify the type of response. Option A, synergistic. Option B, hypersusceptibility. Option C, allergic. Option D is paradoxical. तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वही करेक्ट आंसर है. पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस में जो होता है वो जो रिस्पॉन्स होता है वो इज वेरी डिफरेंट एंड अपोजिट टू द विच इज एक्सपेक्टेड आउटकम. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, पैराडॉक्सिकल. क्वेश्चन नंबर 6. Ravi, a registered nurse, is having his evening duty in cardiac ICU. The team leader has assigned a patient of congestive heart failure (CHF) with history of hypothyroidism to Nurse Ravi. While taking the handover from the morning staff, Nurse Ravi noticed that attended doctors has mentioned on the patient's file not to take the temperature from the rectal route. Ravi asks to morning staff the reason of not taking the temperature from the rectal route. What statement made by the morning staff is considered to be correct? Option A, checking rectal temperature in this case will cause increase in heart rate. B, checking rectal temperature in this case will cause a decrease in heart rate. Option C, checking rectal temperature in this case will cause increase in blood pressure. And D is checking rectal temperature will cause इंक्रीज इन पल्स रेट. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चेकिंग रेक्टल टेम्परेचर इन दिस केस विल कॉज डिक्रीज इन हार्ट रेट. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रेक्टल रूट होता है वो स्टिमुलेट कर सकता है वेगस नर्व को, विच कैन लीड टू वेगल स्टिमुलेशन, और वेगल स्टिमुलेशन के कारण हमारा जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है. तो दिस मे कॉज कॉम्प्लिकेशन टू अ पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. So it may be restricted in this case. Question number 7. You are working as a daycare nurse and posted in the endoscopy room where you have a patient shifted from the nephrology department for the procedure of PEG tube insertion. Select the most appropriate statement related to the insertion of PEG tube. Option 1. The PEG tube is inserted in the jejunum through the endoscope. Option B. It exists from the right upper quadrant of the abdomen. Option C. The tube is inserted with the help of an endoscope through the nose and held in the abdomen for feeding purpose. And option D is the tube is inserted with the help of an endoscope through the mouth and then with the help of guide wire the gastrostomy tube is placed. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी. तो फ्रेंड्स जो पीईजी ट्यूब होती है वो होती है परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, a PEG tube is inserted with the help of endoscope through the mouth and then with the help of the guide wire the gastrostomy tube is placed. Question number 8. A group of nursing students are discussing the case file of a patient in ICU. The students are going through the doctor's progress notes to identify the nutritional status of the patient. They have found one terminology PEGJ under the nutritional management. They asked the senior nurse present at the nursing station about the full form of PEGJ. Select the best response from the following. Option A, percutaneous endoscopic transgastric jejunostomy. Option B, percutaneous extension gastrostomy and jejunostomy. Option C, percutaneous gastric jejunostomy, and option D is permanent enterogastric jejunostomy. Clinical based
क्वेश्चंस में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे जिसमें एक सिनेरियो दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक ट्रांसगैस्ट्रिक जेजुनोस्टमी, जो कि PEG का फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 9, esophagus. Nurse Ramya has assigned to provide care to her patient who is with a chest tube catheter. On assessment of the drainage system, the nurse has observed that there is bubbling in the water-sealed chamber when the patient breathes. Which among the following is the primary nursing action to be applied by the nurse rules? And options are: inform the doctor immediately as it is considered as an abnormal finding. B, check the drainage system for any air leakage. C, continue to monitor as it is considered as normal finding. And D is check the drainage system for any tube kink or obstruction. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, कंटिन्यू टू मॉनिटर एज दिस इज कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल फाइंडिंग। जब बबलिंग होती है वाटर सील चैम्बर में जो हमारे चेस्ट में होता है, उसमें ब्रीदिंग के साथ अगर बबलिंग है तो इट इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल फाइंडिंग, क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि जो चेस्ट ट्यूब है वो नॉर्मली फंक्शन कर रही है और हमारी जो एयर है वो एस्केप हो रही है फ्रॉम द प्लूरल स्पेस ड्यूरिंग एस्पिरेशन एक्सपिरेशन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। While taking the nursing round, you have noticed that one of the patient's chest tube drainage system has disconnected from the patient chest tube catheter and fallen onto the floor. While the chest tube catheter is secured with sutures and hanging in the air, what would be your priority nursing action? And the options are: inform the team leader immediately. B is insert the chest tube catheter tubing 1 inch into the bottle of sterile water and obtain a new system. And C is clamp the chest tube catheter and inform the doctor. And D is remove the chest tube catheter from the insertion site to reduce the risk of infection. तो यहाँ पे है जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंसर्ट द chest tube catheter into tubing in 1 inch into a bottle of sterile water and obtain a new system. क्योंकि अभी जो हमारे जो पेशेंट की चेस्ट में जो ट्यूब इंसर्ट हो रखी है वो अनस्टेराइल नहीं हुई है, बिकॉज इट इज हैंगिंग इनटू द एयर एंड सिक्योर्ड विद द सूचर्स टू द पेशेंट। तो हमें उसको एक स्टेराइल सिस्टम में सिक्योर करना होगा, तो we need to insert the chest tube catheter into a bottle of sterile water and obtain a new system. तो क्वेश्चन नंबर 11, you are assigned to provide care to a patient admitted in medicine ward with diabetes mellitus and planned for Humulin NPH insulin daily morning. As an assigned nurse, you are giving instructions to the nurse intern about most likely time for hypoglycemic reaction to occur in this patient will be. And options are: 1 to 2 hours after administration of insulin, 4 to 12 hours after administration, 16 to 18 hours after administration, या 24 hours after administration. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 4 to 12 आवर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। एनपीएच ह्यूमुलिन इंसुलिन जो होता है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है और इट टिपिकली इट पीक्स इन इट्स एक्शन इन 4 to 12 आवर्स, तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो 4 to 12 आवर्स ही है। Question number 12. A patient is intubated with ET tube, and to check the placement of the ET tube bedside, chest X-ray is recommended by the doctor. The tube is properly placed if it is how many centimeters above the carina. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है ऑप्शन ए 1 to 2 सेंटीमीटर, बी 2 to 4 सेंटीमीटर, सी इज 4 to 6 सेंटीमीटर एंड डी इज 6 to 10 सेंटीमीटर। तो कैरिना से कितना ऊपर होना चाहिए हमारा ईटी ट्यूब, वो है 1 to 2 सेंटीमीटर अबाउट द कैरिना।
मैं यहाँ पे बता दूं, कैरिना जो होता है वो एक पॉइंट होता है ट्रैकिया में जहाँ पे वो डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकाई में। तो जहाँ पे ब्रोंकाई डिवाइड हो जाते हैं उस पार्ट को, ट्रैकिया के उस पार्ट को हम कैरिना बोलते हैं। तो कैरिना से 1 to 2 सेंटीमीटर अबव होनी चाहिए ईटी ट्यूब फॉर अ प्रॉपर प्लेसमेंट। Next question, question number 13. A 22-year-old alcoholic malnutrition patient presented to hospital with respiratory distress. His pulse was 110 per minute. Patient has edema. Hypertension and systolic murmur along the left sternal edge. Bilateral crepitations were left in the lungs. A diagnosis of congestive high output cardiac failure was made. Which vitamin is deficient? ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है विटामिन B1, C, B2 एंड B6। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विटामिन B1। एंड विटामिन B1 जो होता है वो थायमीन भी बोलते हैं उसको, और ये बहुत ही असेंशियल होता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, पर्टिकुलरली यूज ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी। तो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है जो वो वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम की है, जिसमें विटामिन B1 डेफिशिएंट होता है और थायमीन की डेफिशिएंसी होती है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following stage of anesthesia is characterized by stage of surgical anesthesia? Eyes roll, then become fixed, and the corneal and laryngeal reflexes are lost. तो ये स्टेज 3 होती है जो ऑप्शन सी है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, a 75-year-old patient with Alzheimer's disease is brought to the hospital by the family. They report that she has been having trouble while performing her activities of daily living, including brushing her teeth. When you observe the patient, you observe that the patient is having difficulty in holding the brush and making the appropriate movements to brush her teeth. Which of the following neurological disorder is patient most likely experiencing? Options are option A agnosia, option B apraxia, option C anomia, and option D is aphasia. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया जो होता है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो पर्सन होता है उसकी मोटर स्किल्स जो है वो काफी अफेक्ट हो जाती हैं। और इन केस ऑफ एल्जीमर्स डिजीज जो पेशेंट के मूवमेंट्स हैं जैसे ब्रश करना, टीथ को ब्रश करना, या कोई भी मोटर एक्टिविटीज को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है पेशेंट को करने में। तो ये है ऑप्शन बी एप्रेक्सिया। Question number 16. A 62-year-old patient with cardiovascular disease is admitted to the hospital with worsening ventricular arrhythmia. The healthcare provider suspects that a medication might be causing the arrhythmia. Which of the following is the most likely responsible medicine for the development of arrhythmias? And the options are: first is dobutamine, B is quinidine, C is methyl dopa, and D is propranolol. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्विनिडीन। क्विनिडीन इज एन एंटी एरिथमिक मेडिकेशन बट sometimes it may cause pro-arrhythmic effects and it may worsen the arrhythmias and create new types of arrhythmias in some cases. So quinidine is the correct answer here. Question number 7. A 52-year-old man is hospitalized for the treatment of adrenal crisis. On the morning notation, the nurse is evaluating the care provided to the patient for the treatment. Which of the following changes would indicate that the patient is responding favorably to medical and nursing treatment? Options are: the patient has experienced weight loss, B, patient's peripheral edema has decreased, C, patient's peripheral edema has increased, option D, the patient's blood pressure has increased. तो यहाँ पे है जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पेशेंट्स ब्लड प्रेशर हैज इंक्रीज्ड। एड्रिनल क्राइसिस इज टिपिकली एसोसिएटेड विद लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कोर्टिसोल एंड अदर एड्रिनल हार्मोन्स। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो
जो एड्रिनल क्राइसिस है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स जो मेडिकेशंस हैं वो दी जाती हैं टू रिस्टोर द हार्मोनल लेवल्स एंड स्टेबलाइज द पेशेंट। और जो इंक्रीज होता है अगर ब्लड प्रेशर में, तो ये एक अच्छा साइन है दैट पेशेंट इज इम्प्रूविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। Question number 18. A man is brought to the emergency after he fell into a manhole and injured his perineum. He feels that the urge to micturate but is unable to pass urine, and there is blood at the tip of the meatus and extensive swelling of the penis and scrotum. What is the location of the injury? And the options are: first, bulbar urethra, B is prostatic urethra, C is bladder, and D is membranous urethra. And the correct answer is option A, bulbar urethra. Question number 19. The nurse is performing an initial post-operative assessment on a patient who has chest tube attached to a water-filled drainage system. The nurse should immediately intervene for which of the following observation? And the options are: water-sealed drainage system is above the patient's chest. B, there is no dependent loops in the chest tube. C, fluid level in the water seal chamber is at 2 centimeters. And option D, the chest tube remains unclamped. तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है, वाटर सील्ड ड्रेनेज सिस्टम इज अबाउट द पेशेंट्स चेस्ट. Question number 20. A patient with a diagnosis of chronic lymphocytic leukemia is admitted to the hospital for management of hemolytic anemia. Which intervention included in the nursing care plan meets the patient's needs? And options are: encourage activities with other patient in the ward. Option B, vitamin C supplementation. Option C, maintain a quiet environment to promote adequate rest. And option D is isolate the patient to prevent infection. तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, टू मेंटेन अ क्वाइट एनवायरनमेंट टू प्रमोट एडिक्वेट रेस्ट, इज द करेक्ट आंसर. Question number 21. A patient arrives at the emergency department with complaint of chest pain. The nurse performs an assessment. Which of the following symptoms would be most characteristic of an acute myocardial infarction? Option A, severe substernal pain radiating down the left arm. Option B, intermittent localized epigastric pain. Option C, sharp burning chest pain moving from place to place. And option D, sharp localized unilateral chest pain. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सिवियर सबस्टर्नल पेन रेडिएटिंग डाउन द लेफ्ट आर्म. Next question. A patient, a 40-year-old female with previous case history of fever, fatigue, weight loss, polyarthralgia, and radiological findings given below. What may be your diagnosis? And the options are: osteoarthritis, B is rheumatoid arthritis, C is gout, and D is psoriatic arthritis. तो करेक्ट आंसर है वो है rheumatoid arthritis. यहाँ पे एक एक्सरे की फाइंडिंग दी हुई है, इसमें प्रॉपरली दिखाया हुआ है कि हाउ जॉइंट्स आर अफेक्टेड इन rheumatoid arthritis, mainly the small joints. Question number 23. The nurse suspects a patient has meningitis. The nurse places the patient in a dorsal recumbent position, places the hands behind the patient's neck and bends it forward. The nurse knows that pain and resistance may indicate neck injury or arthritis. But if the patient also flexes the hips and knees, this positive response is which of the following? First is Brudinsky sign, second is Chopstick signs, then Homan signs या फिर Trausius sign. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है मेनिंजाइटिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रुडिन्स्की साइन पॉजिटिव है तो डायग्नोसिस हमारा मेनिंजाइटिस ही होता है. Question number 24. In a post-operative unit, a patient developed a wound infection and later 3 other patients in the same unit also developed infections. What is the most optimal method to prevent the transmission of infection? Option A, wash out the instrument with 1% hypochlorite, then give IV antibiotics to all patients in the ward.
C is fumigation of the ward and D is proper hand washing of all ward personals. तो बहुत ही कॉमन, बहुत ही इजी और बहुत ही अप्रोप्रिएट मेथड जो है क्रॉस इन्फेक्शन को बचाने के लिए वो है हैंड वॉशिंग एंड दैट टू प्रॉपर हैंड वॉशिंग फॉर एवरी पर्सनल इन द वार्ड. So option D is the correct answer here. Question number 24. A 20-year-old female is brought to the emergency department by her parents. Her blood pressure is 220 over 136 mm of Hg. Heart rate is 142 beats per minute and respiration is 20 breaths per minute. She is responsive only to deep pain. Her parents say she has been trying to lose weight and has been taking these pills she gets over the internet. What will be the nurse consider as the most likely cause of the patient's symptoms? Option A, cardiac arrest. Option B, food poisoning. C is hemorrhagic stroke and D is pregnancy-induced hypertension. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है hemorrhagic stroke. Option C is the correct answer. Question number 25. A 44-year-old female cook presents with 1 year history of dyspnea, episodic cough and wheeze, shortness of breath and chest tightness. What is the best way to diagnose bronchial asthma in the patient? And options are wheeze, dyspnea, FEVI values या फिर vital capacity. FEVI values जो होती हैं वो जो हमारा forced expiratory volume है in 1 second में वो indicate करती हैं और ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है टू डायग्नोज इफ द पेशेंट हैज ब्रोंकियल अस्थमा. तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को बोला जाता है फोर्सफुली एक्सेल करने के लिए फॉर 1 सेकेंड और यही इंडिकेट करता है कि पेशेंट्स के लंग्स की कितनी अच्छी कैपेसिटी है एक्सेल करने की. तो यहाँ पे जो है FEVI वैल्यूज को इवेलुएट किया जाता है. Question number 26. Ramesh was rushed to hospital owing to vomiting and reduced consciousness. Patient shows slow and deep breathing and is lethargic and irritable, appears dehydrated and sunken with eye and dry mucosal membranes. He has a history of polydipsia, polyuria and weight loss since 2 weeks. Measurement of arterial blood gas shows pH 7.2. PaO is 90 mm of Hg, PaCO 23 mm of Hg and HCO is 12 millimole per liter. What is your interpretation? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं expiratory acidosis uncompensated, respiratory acidosis uncompensated, then B is respiratory acidosis partially compensated, C is metabolic alkalosis uncompensated and D is metabolic acidosis partially compensated. तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, metabolic acidosis partially compensated. Question number 28. Approximately 30 to 60 minutes after being bitten by a bug, a 30-year-old man noticed a localized swelling and arrhythmia in the affected area. The edema is most likely the result of A. Altered plasma oncotic pressure, B. Increased arterial hypostatic pressure, option C. Increased vascular permeability and option D is lymphatic obstruction. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है increased vascular permeability. Question number 29. A 35-year-old female presented with swelling in the neck. For past 2 months, she received radiation to the neck when she was 20 years old. Clinical examination also revealed a single node in the left side of the neck which moves with deglutition. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, papillary carcinoma. Papillary carcinoma is the most common type of thyroid cancer and it is usually presented at subtle, commonly slow growing, painless and thyroid mass. So correct answer is papillary carcinoma. Question number 30. A 26-year-old lady comes with the right upper abdominal pain and vomiting since 1 day. Patient had a similar episode 1 month back. On examination, there is tenderness in the right hypochondrium.
What is the investigation of choice to confirm the diagnosis? Options are, first is USG, MRCP, ERCP या फिर CECT. तो करेक्ट आंसर है हमारा USG यानी अल्ट्रासाउंड. तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी वीडियो थी. आज 30 क्वेश्चंस हमने किए जो टोटल सिनेरियो बेस्ड थे. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए. थैंक यू, बाय बाय.